हेलो एवरीवन। चलिए कंटिन्यू करते हैं विद द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 17 जिसमें तीन पार्ट हैं, ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड फोरेंसिक अकाउंटिंग। ड्यू डिलिजेंस ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, तो हमारा आज का सेशन इन्वेस्टिगेशन के टॉपिक पर होगा। इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमें पहला टॉपिक स्टेप्स इन इन्वेस्टिगेशन, thereafter special aspects with respect to business investigation, special issues in investigation। इन्वेस्टिगेशन दो तरह की होती है, स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन एंड नॉन स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन। स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन आप कॉर्पोरेट लॉ के अंदर चैप्टर 4 इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन उसमें कवर करेंगे। नॉन स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन ऑडिट के पेपर में है। इसके अंदर आप इन्वेस्टिगेशन कवर करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ इनकमिंग पार्टनर, इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ बैंक फॉर द एडवांसेस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड एंड इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल और फर्म प्रपोजिंग टू बाय अ बिजनेस। तो चार तरह की नॉन स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन आ गई। एक इनकमिंग पार्टनर के बिहाफ पर, बैंक के बिहाफ पर, फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन प्रपोजिंग टू बाय अ प्रोप्राइटरी और अ पार्टनरशिप बिजनेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्टरी टॉपिक ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट कंप्राइजेस ऑफ steps in investigation, special issues in investigation and aspects related with the business investigation। First topic, steps in investigation। as usual कोई भी एक्टिविटी, ऑडिट, रिव्यू, ड्यू डिलिजेंस, फोरेंसिक अकाउंटिंग, कोई भी एक्टिविटी जो एक प्रोफेशनल करता है, तो वो एक्टिविटीज में सबसे पहले जो बात आती है, डिटरमिन what is the objective of this engagement and what are the area that are to be covered in that engagement। so first topic आएगा, first step आएगा determination of objective and establishing the scope of investigation। after establishing, after determining objective and establishing the scope, investigating accountant is required to draw the investigation program। Based upon this program, various procedural aspects are to be performed so as to collect the evidences। The evidences so collected need to be analyzed and interpreted so that a report may be issued। So fourth step is analysis and interpretation of finding and last step is the reporting of findings। So स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी है जिसमें सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव को डिटरमिन किया, अपने स्कोप को एस्टैब्लिश किया, बेस्ड अपॉन दैट इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम को फॉर्मुलेट किया, एविडेंसेस को कलेक्ट किया, फाइंडिंग्स को एनालाइज एंड इंटरप्रेट किया और एक रिपोर्ट इशू की। तो की वर्ड आ गए ऑब्जेक्टिव, स्कोप, प्रोग्राम, एविडेंस, फाइंडिंग्स, रिपोर्टिंग। नो, जो क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है, व्हाट आर द कंसीडरेशंस while preparing, while drafting the report of findings। number 1, report should not contain anything which is not relevant, only relevant points are to be covered। expressions, terms that are used in the report should be properly considered so as to avoid any ambiguity। relevant facts and conclusions, they should be properly linked। जो फैक्ट आपके सामने आया है उसके बेस पर जो कंक्लूजन ड्रॉ किया गया है, they need to be linked। various bases and assumptions that are considered while doing the investigation, they should be explicitly, specifically stated in the report। nature and objective of the assignment should also be clearly mentioned। report should be made in paragraph form and if possible give a separate heading for each paragraph। restrictions or limitation, if any imposed by the management, they should also be specifically mentioned। opinion should appear in the final paragraph of the report। so
जब हम इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट को तैयार कर रहे हैं तो एट दैट टाइम हमें किन किन चीजों को कंसीडर करना चाहिए? नंबर वन, कोई भी ऐसी चीज जो रेलिवेंट नहीं है वो रिपोर्ट का पार्ट नहीं बननी चाहिए। नंबर टू, जो एक्सप्रेशंस यूज किए जा रहे हैं इन द रिपोर्ट दे शुड बी प्रॉपरली कंसीडर्ड सो दैट कोई एम्बिग्विटी नहीं आनी चाहिए। Facts and circumstances they should be properly linked. Any basis and assumption that are used in investigation activity they should be explicitly stated. Nature and objective of the assignment should be clearly mentioned. Report should be divided in various paragraphs with separate heading for each paragraph. Restriction or limitation, if any, imposed by the management that should be specifically mentioned. Opinion should be appear in the final paragraph of the report. तो ये एक क्वेश्चन थ्योरेटिकली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है 4 to 5 मार्क्स का। नाउ व्हाट आर द स्पेशल इश्यूज इन इन्वेस्टिगेशन, जिनके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाया जा सकता है, केस स्टडी भी बनाई जा सकती है। नंबर वन, extent of the investigation, to what extent we are required to perform our activity. It all depends upon the circumstances, scope of our engagement, and it may be 100% verification of each and every aspect, or it may be a selective examination. And if it is a selective one, samples should be selected considering the statistical techniques. So if selective, use the statistical sampling. So extent of investigation, it depends upon the circumstances. It may be 100% examination, it may be selective testing. If selective testing, apply statistical techniques. Reliance on audited financial statement. While carrying out the investigation, whether audited financial statements can be relied upon, there are two situations, two circumstances. If question arises on the, if investigation occurred due to doubt on the reliability of financial statement, then of course this audited financial statement cannot be relied upon. However, if the matter of the investigation is not a doubt on the reliability of the financial statement, then of course these financial statement can be considered reliable and we can use these audited financial statements. So whether to rely on the audited financial statement or not, it all depends upon the circumstances. If investigation is carried out because of any doubt in the financial aspect, financial statement, accounting record, etc., then no reliance can be placed on this audited account. However, if there is no such doubt over the reliability of the financial statement, then investigator या investigating accountant is entitled to rely on this audited account. Whether any expert may be engaged, depending upon the nature of the engagement, if any technical advice is required, then investigating accountant may take the assistance of the expert with the consent of the person who engaged the investigating accountant. So investigating accountant can take assistance of expert, but for that he needs to obtain consent of the client. Investigation out of dispute. If there is a dispute in between two persons, say for example among the partners, there is a dispute among the partners in case of the partnership firm. In that case, if investigation is ordered, if investigation is requested by all the partners into the accounts of the firm, into the operating activities of the firm, then investigating accountant need to be alert for any prejudiced information. Keep in mind interest of all partner and exercise best of the skills. Basis of opinion, basis should be on the opinion should be based upon the established facts, and for the facts that you have established you must have the supporting documents available with you in the form of evidences. Opinion should be confined to established facts.
effects are not capable of being established, express a qualifying opinion. Whether the investigating accountant can issue any futuristic statements, whether he can predict the future based upon the past. No, avoid giving such futuristic statements. Assumptions may be taken as to the continuing of the established trend, but no projection should be made for the future trends. You can assume that the trends of the past may continue in future, but based upon that, no projection should be made for the future trends. Retention of working paper. Of course, we need to retain all the working paper. Paper give evidence in court to support the report. So this is about the various special issues in the investigation. Now again, special aspects with respect to the business investigation, pure theoretical topic. We need to learn the points with respect to economic and financial position of business, with respect to assessing future maintainable turnover, with respect to assessing valuation of trade receivable, with respect to assessment of working capital requirements. So first activity, while carrying out a business investigation, investigating accountant is required to study the economic and financial position of the business. For that purpose, he need to determine whether the fixed capital and the working capital employed in the business is adequate and sufficient for the growth of the business. Establish trend of sales and profits in future. It helps in drawing a conclusion whether that trend will be maintained in future or not. Consider whether the expected profit in future would yield the adequate return on capital. Determine whether the business is operating at 100% capacity or improvement required to reach at the full capacity. So, while studying the economic and financial position of business, investigating accountant is required to determine adequacy of fixed and working capital, whether it is sufficient for the growth of business. He need to establish trend of sales and profits in future that help him in drawing a conclusion whether this trend will be maintained in future or not. Consider whether expected profits in the future would yield adequate return on capital employed. Determine whether the business is operating at 100% capacity or improvement required to reach at the 100% or full capacity. So एक point capital से related, एक point trend से related, third point it is related with the expected profit, and fourth point is related with the capacity. Now continue to the next topic, assessing future maintainable turnover. Whether the turnover that is achieved in the past can be maintained in future. For that purpose, we need to determine the trend. We need to analyze the trend, whether the sales are constant, whether they are decreasing, whether they are increasing. So we need to assess the trend of the sales. Determine whether sales are increasing consistently or fluctuating. Marketability. Is it possible to explore new market? If we are selling in domestic market, whether it is possible to explore the export? If we are making export to European countries, whether it can be explored to another countries, other Asian countries, etc. Is it possible to extend the sales into new market, or whether these have already been fully exploited? Product-wise estimation should be made. Political and economic consideration. Whether the government policy is likely to promote the extension of market for goods to other countries. Whether local sales likely to increase or decrease as a result of emerging economic trend. Competition. What is the likely effect on the business if other
competitors enter into the same field or product in competition are placed in market at a cheaper price. Is demand for competing products increasing? Is company share in total trade constant or is been fluctuating? So due to new competition, whether companies shares in total trade constant or fluctuating, क्या demand for the competing product is increasing? Likely effect of the competition over our business activities. So while assessing the future maintainable turnover, investigating accountant is required to focus on trend. He is required to consider the aspect of marketability, political and economic consideration, and the competition. Next one, assessing the value of trade receivable. That is, whether the provision for bad debt have been made in the year in which the relevant sales took place. If the sales occur in the financial year 23-24, the provision should also be made in the same financial year. It should not be there that sales made in the financial year 23-24, whereas the provision is made in the year 24-25. Consider the length of credit period allowed or any extensive discount allowed to the trade receivable. Debt should be classified according to their age. Determine debtor to sale ratio. So, one aspect, whether the provision for bad debt has been made in the year in which the sales have been made. Length of the credit period and the excessive discount need to be considered specifically. Classification of debt according to the period, or you can say aging schedule. Determine debtor to turnover ratio. Debtor turnover ratio. Last point, again a theoretical one, assessing the working capital requirements. Working capital requirement. Has inventory turnover ratio been increasing? Is it continuing or a temporary trend? So first aspect, it is related with the evaluation of analyzing the inventory turnover ratio, whether it is increasing or that increasing trend is a constant one, or it is fluctuating, sometime increasing, sometime decreasing, sometime remains constant, etc. Are trade payable being paid promptly, or is there is a backlog which have to be dealt with? Consider the effect on inventory, trade receivable and trade payable in case inventory is increased or new products are being introduced. These are the general points, and you need to remember, you need to learn, you need to write down only these points in the exam. In the examination hall, your focus should be only on those points that are covered in the study material of ICAI. If you mention any other point, there is a possibility that paper checker will not award any marks to that point. So try to cram these points, learn these points only, and to learn these points, one solution is there. You may have written down practice of these topics, particularly the important ones. चलिए आगे बढ़ते हैं नॉन स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। इसमें फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन, that is investigation on behalf of incoming partner. Point number 1, ascertain history of firm. यदि एक पर्सन किसी न्यू फर्म को एज ए पार्टनर ज्वाइन कर रहा है और वो एक इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट को हायर करता है और कहता है कि मैं इस फर्म को ज्वाइन कर रहा हूं, आप मुझे एडवाइस करिए मुझे इस फर्म को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितनी कैपिटल मुझे देनी चाहिए एक पर्टिकुलर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए, या इतनी कैपिटल मैं दे रहा हूं मेरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होनी चाहिए, कितनी गुडविल मुझे देनी चाहिए, एटसेट्रा।
तो इसके लिए जो इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट है उसको कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी चाहिए? नंबर 1, ascertain the history of firm since inception and growth of the firm. Study the provisions of deed of partnership, particularly for the composition of partner, capital contribution, drawings, etc. Examine record of profitability of firm business over a number of years. Examination of asset and liability position to determine the tangible assets, investment value of intangibles, contingent liabilities, etc. Assess the position of order at hand, quality of clientele, type of clientele, terms of loan finance to assess its usefulness and implications for overall financial position. Study the important contractual and legal obligation, composition and quality of key personnel employed by the firm and likelihood of their leaving the organization. What are the reasons for the offer of admission to new partner? Appraisal of record of capital employed and the rate of return. Compare it with the alternative business avenue for the investment. Ascertain the manner of computation of goodwill. Examine whether there exists any special clause in the deed of partnership to allow admission in future of a new partner. So these are very generalized points over which the investigating accountant tends to put focus while carrying out the investigation on behalf of an incoming partner. So this is about the investigation part 1. इन्वेस्टिगेशन की सेकंड टाइप है whenever an investigation is requested by a bank. किसी क्लाइंट ने बैंक को अप्रोच किया है to grant him a project funding. Before granting the loan, before providing any assistance of funds, working capital, term loan, machinery loan, project funding, etc., bank wants a due diligence. बैंक एक इन्वेस्टिगेशन कराना चाहता है, क्या हमें लोन देना चाहिए इस क्लाइंट को या नहीं देना चाहिए? इफ यस, what should be the terms and condition, what should be the repayment schedule, what should be the amount of loan? So for that purposes, detailed investigation may be requested by the bank for the purpose of granting advances to the client. So second investigation is the investigation on behalf of the bank for the advances. So investigating accountant is required to collect the information as to the purpose for which the loan is required, the manner in which the borrower proposed to invest the amount of loan, schedule of repayment, particularly the assumptions made therein as to the amount of profit that will be earned in the future out of which the repayments will be made. Confirm whether the amount of profit assumed to be earned in future is reasonable and valid. Financial standing and the reputation for the business integrity enjoyed by the director and the officers of the company. Authorization under the memorandum of association or article of association to borrow the money for the purpose for which the loan will be used. History of growth and development of the company and performance over past few years, say for 5 years. So investigating accountant is first required to collect the information, and that information will be for the purpose for which the loan is to be obtained, the manner in which the borrower proposed to invest the amount of loan, schedule of repayment, assumptions made therein regarding the amount of profit that will be earned in cash and available for repayment, financial standing and reputation for the business integrity enjoyed by the director and officers of the entity, authorization under memorandum and article to borrow the money for the purpose for which the loan will be used, history of growth and development of the company for past 5 years. After collecting this information, the investigating accountant is required to examine the financial statements in detail, and the examination involves preparation of condensed income statement,
सो एज टू डिटरमिन कहां से रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं, कहां पर रेवेन्यू के अमाउंट को यूज किया जा रहा है, एक्सपेंड किया जा रहा है. Computation of relevant ratios like inventory turnover ratio, sale to fixed ratio, current ratio, quick ratio, and return on capital employed ratio, inventory turnover ratio. So a number of ratios जो लिंक रखती है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से, कंपनी की लिक्विडिटी से, कंपनी की रिपेमेंट से, उन सब रेशो को आपको कंप्यूट करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए. ब्रेकअप ऑफ एनुअल सेल्स एंड दैट मे बी प्रोडक्ट वाइज, उसको एनालाइज करिए. किस प्रोडक्ट की सेल्स में ग्रोथ है, किस प्रोडक्ट की सेल्स कांस्टेंट है, किस प्रोडक्ट की सेल डिक्लाइन हो रही है. प्रिपेयर ए शेड्यूल ऑफ ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज, उनकी मूवमेंट्स को एनालाइज करिए, उसके बेसिस पर जो रेशोज निकाली गई है उन रेशोज को एनालाइज करिए एंड देन टेक अ प्रॉपर डिसीजन. डिसीजन बैंक ने लेना है. इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट तो अपने फैक्ट जो उसके सामने आया है उसके बेस पर अपना प्रोपोजिशन रख सकता है बैंक के सामने. सो while an investigating accountant is hired by the bank for the purpose of granting any advance to the client, investigating accountant is required to collect the information and examine the financial statements. Moving ahead, next type, that is investigation of fraud. इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है दैट इज वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रॉड. फिर आएगा वेज ऑफ कमिटिंग द फ्रॉड एंड वेरियस मीन्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड, इंडिकेटर ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड डायमेंड्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट द फ्रॉड. तो फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन अपने आप में एक फुल फ्लेज टॉपिक है. नॉन स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन में एक इन्वेस्टिगेशन हमने पढ़ी ऑन बिहाफ ऑफ इनकमिंग पार्टनर, दूसरी इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ बैंक, तीसरी इन्वेस्टिगेशन जो अभी हमें रिवाइज करनी है वो फ्रॉड की, फोर्थ इन्वेस्टिगेशन है ऑन बिहाफ ऑफ एन इंडिविजुअल और फर्म प्रपोजिंग टू बाय अ बिजनेस एंड दैट बिजनेस में बी ए प्रोप्राइटरशिप, that business may be a business of partnership firm, that business may be of a company. तो पहले मैं आपको ये टॉपिक करा रहा हूं, देयर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड को कवर अप करेंगे. इन केस any person is interested in buying a proprietary concern or a partnership business, then investigating accountant is required to consider number 1, what are the reasons for the sale of business, effect of such sale over the turnover and profits. So what are the reasons for the sale of business and effect on turnover and profit जो प्रेजेंट प्रोप्राइटर के रिटायर होने के कारण कंपनी की टर्नओवर या प्रॉफिट पर इफेक्ट आएगा. सेकंड वन, लेंथ ऑफ लीज अंडर विच द प्रीमाइसेस आर बीइंग हेल्ड, whether there are prospects of renewal or extension of lease, unexpired period of any patent owned by the vendors, age of present managerial staff and prospects of their continuation in service under new proprietorship, new management, possible liability that is not already provided for that would arise regarding the पेमेंट ऑफ पेंशंस, ग्रेचुटी इन केस जो ओल्ड मैनेजरियल स्टाफ है वो कंटिन्यू नहीं करता और वो टर्मिनेट किया जाता है या वो वॉलंटरली टर्मिनेशन चाहते हैं या कंपनी खुद उन्हें रिट्रेंच्ड करती है. इफ बल्क सेल्स आर मेड टू कस्टमर हुज नंबर्स इज स्मॉल देन इट इज ए रिस्की बिजनेस, बिकॉज जो आपके कस्टमर्स हैं वो बहुत कम है, 3-4 पर्सन है जो आपके सामान को खरीदते हैं. यदि वो पीछे हट गए, न्यू मैनेजमेंट से डीलिंग नहीं करना चाहते, देन बिजनेस विल बी अ कंप्लीट फेलियर. सो इफ बल्क ऑफ सेल आर मेड टू कस्टमर्स हुज नंबर इज स्मॉल, profitability of business would be greatly shaken
on withdrawing their support. And this would be an element of weakness which needs to be investigation as it might affect the future profitability. Valuation that could be placed on goodwill so as to determine whether the goodwill appearing in the book is less or more. If nothing is given in the books of account as to the goodwill, then it should also be ascertained what is the goodwill of this business. So these are the points that needs to be considered by the investigating accountant if he is investigating a situation when a person is proposing to buy a business of a proprietor or partnership entity. First, reason for sale of business and effect on profit and turnover due to retirement of present proprietor or partner. Second point, length of lease under which the business premises are being held and prospect of their renewal or extension. Unexpired period of any patent owned by the vendor. Age of present managerial staff and prospects of their continuation in service under the new management, and possible liability that is not already provided for that may arise regarding payment of pension and gratuities of the employees that are retrenched. If bulk of sales are made to customers whose number is small, profitability of business will be greatly affected if these customers withdraw their support. So this is an inherently weak point that needs to be duly investigated. Valuation of goodwill to determine whether the goodwill appearing in the books of account is less or more, or if at all goodwill is not been valued or recorded in the books of account. The next one, matters to be considered if the business belongs to a limited company. If an entity is proposing to buy a business of a company, that may be a private company, that may be a public company. So what are the points that needs to be considered by the investigating accountant? Authorized and issued capital of the company. Uncalled liability, if any, on the share. What are the rights attached to each class of shares if company has issued differential equity? Particulars of dividend paid in past and amount which are in arrear on cumulative preference shares. If there are any mortgages or charges created on assets appearing in the company book, a search should be made in the register of charges in the office of registrar of companies. Price at which shares are being offered. If company is a public company, price will usually be in excess of the market price quoted on the stock exchange. However, if it is a unlisted public company or particularly a case of private company, shares are unquoted or private company, valuation will have to be placed on the shares for the purpose of purchase. So, if a person is proposing to buy a business of the company, then investigating accountant is required to examine authorized and issued capital of the company, uncalled liability, if any, on the shares of the company, rights attached to each class of the share if capital is divided into different class of share, particulars of dividend paid in past and amount thereof which are in arrear on cumulative preference shares. एक second. So, point 1, authorized and issued capital. Point 2, uncalled liability on share. Point 3, right attached to each class of share. Point 4, particulars of dividend paid in past. Point number 5, mortgage or charges created. In that case, inspect the register of charge in the office of ROC. Price at which the shares are being offered. So, this is about the
investigation on behalf of individual or firm proposing to buy a business. चलिए कंटिन्यू करते हैं विद द लास्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दैट इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड, जिसके अंदर पहला टॉपिक आ जाता है टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स का। डिफरेंट कैटेगरीज, जिसमें से एक फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एसए 240 में हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ी है। मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स ऑलरेडी 240 में कवर अप करा हुआ है हमने। करप्शन, फ्रॉड फॉर पर्सनल गेन, कॉर्पोरेट फ्रॉड, फ्रॉड एट ऑपरेशनल लेवल एम्प्लॉय। सो दीज आर द वेरियस कैटेगरीज ऑफ द फ्रॉड। एंड एज ए ऑडिटर की बात करूं, ऑडिटर इज प्राइमरली कंसर्न विद विच काइंड ऑफ फ्रॉड? First two category, fraud, financial reporting and misappropriation of assets. But an investigating accountant may have to deal with any kind of fraud. That may be a fraud financial reporting, that may be a misappropriation of asset, that may be a corporate fraud, that may be payroll fraud, that may be corruption, that may be fraud for personal gain, that may be fraud at operational level employees. कोई भी fraud हो सकता है। First one, fraud financial reporting. Example, alteration or falsification of documents or records, intentional omission of events or transaction or information, intentional misapplication of accounting principles, fictitious journal entries, adjusting the assumption and changing judgments, omitting, advancing, or delaying recognition of transaction, abnormal year-end transaction, improper asset valuation, overstatement of revenue or understatement of liabilities. These are the फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मींस बुक्स ऑफ अकाउंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटेंशनली गलतियां की गई हैं। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया गया, ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग को डिले किया गया, रेवेन्यू को ओवर या अंडरस्टेट किया गया, फिक्टिशियस एंट्रीज डाली गई, अकाउंट्स में ऑल्टरेशन की गई, अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शंस को डाला गया, ईयर एंड एडजस्टमेंट्स रॉन्गफुली की गई, अकाउंटिंग पॉलिसीज को मिसअप्लाइड किया गया। सो देयर कैन बी वेरियस एग्जांपल्स ऑफ फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। Misappropriation of assets, like embezzlement of receipts in respect of a return of account. Those accounts which have been written off from the books of account, in relation to that accounts, receipts amount is withdrawn, that is embezzled. Stealing, chori of physical assets or intellectual properties. Fictitious vendors, they are supplying nothing because vendor does not exist, but fake invoices are being raised through which the manipulations are being made. Payroll schemes, ghost employees, falsified wages, commission scheme, using the entity assets for personal use. So these are the few examples of misappropriation of assets. बहुत डिटेल में एसए 240 के अंदर हमने इन दोनों चीजों को पढ़ा हुआ है और इसके बड़े सारे फैक्टर इन रिलेशन टू इंसेंटिव्स, अपॉर्चुनिटीज, रेशनलाइजेशन, जो आपको ध्यान हो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स के अंदर, तो ये ऑलरेडी कवर्ड टॉपिक है जिसका प्रोसीजरल एस्पेक्ट भी एसए 240 में कवर किया, बट दैट वाज ऑडिट, यहां पर इन्वेस्टिगेशन है। तो इन्वेस्टिगेशन माइट बी ए रिजल्ट ऑफ ऑडिटिंग रिजल्ट। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, ऑडिटर ऑब्जर्व सम फ्रॉड, he report, he communicate this fraud to management, to TCWG, and management and TCWG instruct for the detailed investigation. Next,
Corruption. Example, conflict of interest among the top managerial persons. Illegal gratuity. Illegal gratuities का मतलब मीन्स आप एक पर्सन को ग्रेचुटी बेनिफिट अवेलेबल करवा रहे हैं एंड दैट इज नॉट ऑथराइज्ड, दैट इज नॉट लीगल. फ्रॉड फॉर पर्सनल गेन, रिश्वत. Corporate frauds like advance billing, dummy companies, money laundering activities. Fraud at operational level employees. Tampering of checks, drafts, online payments, receipt, off books fraud, misappropriation of cash by the employees, teaming and lading, fraud disbursements, payroll fraud. So in this topic, fraud, financial reporting and misappropriation of assets, these two topics are comparatively important, but again from audit point of view, not particularly from the investigation point of view. From the investigation point of view, this topic is particularly important, and again in relation to supplier's ledger and inventory. These are the 5 areas which are specifically covered in the study material, like cash receipt, cash payment, supplier ledger, customer ledger and inventory. How the fraud can be committed, what are the various ways of committing the fraud with respect to cash receipt, cash payment, supplier's ledger, customer's ledger, inventory, and how, what are the activities that investigating accountant needs to perform to investigate the fraud in cash receipt, cash payment, customer ledgers and supplier's ledger and inventory. First, how the fraud can be committed in cash receipts. Issuing a receipt for full amount collected, whereas on the counterfoil, carbon copy, lesser amount is entered. Showing larger cash discount than actually allowed. Cash sale entered as credit sale. A good debt is written off as bad and irrecoverable, and whenever the amount is collected, amount will be collected because the debt is good one. So whenever the amount is collected, it has been misappropriated because in the book that debt has already been written off as bad and doubtful. Undercasting the receipt side and overcasting the payment side. These are few ways through which the frauds can be committed in cash receipt. How these frauds can be investigated by the investigating accountant. So in relation to cash receipt, investigating accountant needs to examine the income received from different sources. The income that are of small and negligible amount, their records needs to be particularly examined. Review of recoveries from the customer and the sundries party along with the discount on account of cash discount. Examine whether receipts are serially numbered and all receipts are appropriately accounted for. In case any receipt is been cancelled, its original copy needs to be examined and verified. Any unreasonable cash discount needs to be inquired into. So, investigating accountant is required to examine, number 1, income received from different sources. Investigating accountant is required to examine record of small or negligible source of income. Number 3, investigating accountant is required to review the recoveries from the customers and the sundries parties along with the deductions given on account of cash discount.
investigating accountant is required to examine whether all receipts are appropriately accounted for and receipts are serially numbered. In case any receipt is cancelled, its original copy shall be duly verified. For any unreasonable cash discount, management should be inquired into. Now, moving to second item, that is cash payment. It is just opposite of cash receipts. Making double payment of an invoice or making payment against a fake invoice. Paying personal expense out of the business revenues. Withdrawing unclaimed credit balance. If any creditor due to any reason fails to collect his amount, you are withdrawing that amount which is unclaimed. You have no right over that amount, but you are withdrawing it. Falsely adjusting a refund in account of a customer and withdrawing the credit balance. Wrong totaling of wage sheet. Wage total is 1 lakh, but it is mentioned as 1,10,000 and 10,000 has been misappropriated. So, making double payment of an invoice or making payment against a fake invoice. Paying personal expense out of the business collections. Any unclaimed credit balance has been withdrawn. Making a refund in the account of the customer without actually refund and thereafter withdrawing the credit balance. Wrong totaling of the wage sheet and misappropriating the excess amount withdrawn from the bank for payment of wages. So, in relation to cash payment, जो इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट है उसकी एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती है. नंबर 1, he need to examine whether all payments are authorized. Acknowledgement by the parties to whom the payment is made need to be carefully scrutinized. Payment by bearer check. Payment is made, but that payment is not to an account pay check. So if payment is made by bearing check, that is a self check, you are withdrawing the cash for self, it is just like that. So if any payment is made by bearer check, that it requires careful examination. Payment regarding the wages should be examined for possible over totaling of wage sheets, wage total, and there is a possibility of entries regarding dummy workers. Payment for goods purchased should be reviewed to confirm no payment has been made in respect of the supplies which have not been received. An invoice has not been paid 2 times. So, investigating accountant is required to examine that all payments are properly authorized. जिन पर्सन्स को पेमेंट की है उन्होंने अपनी एक्नॉलेजमेंट दी है. दैट एक्नॉलेजमेंट नीड्स टू बी केयरफुली स्क्रूटिनाइज्ड. If the payment is made by bearer check, it requires careful consideration. Payments of wages should be examined for possible over totaling of wage sheet and entries against the dummy worker. Payment for the goods purchased should be examined to confirm that no payment had been made in respect of the supplies which have not been received. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सप्लायर्स लेजर. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. दोनों ही एस्पेक्ट इसके. नंबर 1, व्हाट आर द वेरियस वेज ऑफ कमिटिंग अ फ्रॉड इन द सप्लायर लेजर and what are the means of examination. Adjusting fictitious invoice as the purchases. No actual purchase. कोई actual purchase नहीं हुई है. fictitious invoice generate किया गया, उसके against payment की गई. So that is a misappropriation. Adjusting the fictitious invoice as purchases and subsequently
misappropriating the amount when payments are made. Suppressing credit notes issued by the supplier. सप्लायर ने क्रेडिट नोट इशू किया, दैट मींस उसके अगेंस्ट हमें सप्लायर को कुछ भी नहीं देना, लेकिन इस क्रेडिट नोट को सप्रेस कर लिया गया। जब सप्रेस कर लिया गया तो क्रेडिटर को डेबिट नहीं दिया गया, डेबिट नहीं दिया गया तो आप पेमेंट कर दो। विड्रॉ द कोरस्पॉन्डिंग अमाउंट नॉट क्लेम्ड बाय देम। Withdrawing the amount unclaimed by the supplier for any reason showing that same have been paid. Accepting the purchase invoice at a price higher than the market price and collecting the excess amount paid in cash from the supplier. So, एक पॉइंट आ गया फिक्शिशियस इनवॉइस का। दूसरा, परचेजेस एट प्राइस हायर देन मार्केट प्राइस, suppressing the credit note and withdrawing the amount unclaimed by the suppliers. Examination point. Purchase journal should be vouched with reference to the goods inward book. जर्नल में एंट्री तभी हो when goods actually enter the premises. Amount have been correctly credited in respect of goods duly received. Request the supplier to furnish the statement of their account to find out whether or not any balance is outstanding or due. Confirm that allowance and rebate given by the creditor are properly adjusted in the books of account. Examine the internal control system in relation to purchase order issued. Identify the possibilities of collusion with the suppliers. तो एक पॉइंट आता है परचेज जर्नल का। परचेज जर्नल के अंदर जो भी एंट्रीज हुई है दैट नीड्स टू बी क्रॉस चेक विद द गुड्स इनवर्ड बुक। नंबर 2, जो गुड्स ड्यूली रिसीव्ड हुए हैं परचेज जर्नल में गए हैं वो क्रेडिटर्स के अकाउंट में प्रॉपरली क्रेडिट किया गया। सप्लायर से उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट के बेसिस पर अकाउंट सेल्स स्टेटमेंट की बात करिए कि वो आपको एक करंट अकाउंट या अकाउंट करंट स्टेटमेंट भेजें सो दैट एनी आउटस्टैंडिंग और अमाउंट ड्यू कैन बी एग्जामिन्ड। कंफर्म एनी अलाउंस और रिबेट गिवन बाय द सप्लायर इज करेक्टली एडजस्टेड and internal control system in relation to purchase orders issued. तो board journal, correct credit in the accounts of creditor, supplier की statement, allowance and rebate की correct adjustment, examination of internal control system. 5 point. Next, customer ledger, जो इसका सबसे मेन फ्रॉड होता है टीमिंग एंड लेडिंग। एक से पैसा आया दूसरे में, दूसरे से पैसा आया तीसरे में, तीसरे से आया चौथे में, इस तरीके से करते रहते हैं। misappropriating the amount collected from the customer and adjusting his account by crediting the amount of account of any allowance or rebate for any excess price charge. डेटर ने 10,000 रुपए देने हैं, उसने आपको 10,000 दे दिए, आपने उसके अकाउंट को 8,000 की एंट्री की और 2,000 रुपए बाद में आपने रिबेट दे दिया कि गलत प्राइस चार्ज हो गया था डेटर से। crediting the amount received from a customer to account of another customer and subsequently withdraw that amount, कि गलत क्रेडिट हो गया था अब विड्रॉ कर लिया। अरे जिसके अकाउंट में क्रेडिट नहीं दिया उसके अकाउंट में भी तो क्रेडिट करोगे, उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे तो ये तो एरर ही बन जाएगा कि हमने अपनी गलती सुधार ली। एक्स के पैसा आया, वाई के अकाउंट में डाल दिया, एंट्री, पैसा तो मिस अप्रोप्रिएट कर लिया, एंट्री डाल दी वाई के अकाउंट में, एक्स क्लेम कर नहीं रहा, बाद में वाई के अकाउंट में कहा अरे गलत एंट्री आ गई थी, उठा के रिवर्स कर दी, पैसा विड्रॉ कर चुके हो ऑलरेडी आप। वेरिफिकेशन कैसे होगी?
ट्रेस द एंट्रीज इन द ऑर्डर बुक with corresponding record in the sales day book. कस्टमर अकाउंट को एग्जामिन करो टू एंश्योर दैट दे हैव बीन प्रॉपरली डेबिटेड विद द एप्रोप्रिएट अमाउंट। जैसे क्रेडिटर के अकाउंट को एप्रोप्रिएटली क्रेडिट किया गया, डेटर के अकाउंट को एप्रोप्रिएटली डेबिट किया जाए। क्रेडिटर ने जो आपको अलाउंसेस दी, रिबेट दी, प्रॉपरली एडजस्ट किया गया, तो यदि कोई डिस्काउंट दिया गया या कोई बैड डेट है, देन दैट आल्सो टू बी टेकन केयर ऑफ। अमाउंट रिटर्न ऑफ एज बैड डेट शुड बी केयरफुली एग्जामिन। एनी अनयूजुअल डिस्काउंट गिवन शुड बी थोरोली इंक्वायर्ड इनटू एंड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन should be obtained from appropriate authority. टीमिंग एंड लेडिंग फ्रॉड्स को ड्यू अटेंशन दीजिए। डेटर से बैलेंस कंफर्मेशन ले लीजिए। जैसे हम क्रेडिटर से स्टेटमेंट की डिमांड कर रहे हैं, इन द सेम वे डेटर से भी बैलेंस कंफर्मेशन स्टेटमेंट्स डिमांड की जा सकती है। इट इज अगेन एन ऑडिट प्रोसीजर। तो एग्जामिनेशन ऑडिट से डिटेल होती है, बट इसका यह मतलब तो नहीं हुआ ना कि जो ऑडिट के प्रोसीजर्स होते हैं वो यहां अप्लाई नहीं हो सकते। ऑडिट का प्रोसीजर वाउचिंग, ऑडिट का प्रोसीजर एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ऑडिट का प्रोसीजर एनालिटिकल प्रोसीजर, दैट नीड्स टू बी अप्लाइड इन इन्वेस्टिगेशन आल्सो। बट इन्वेस्टिगेशन में ऑडिटिंग एस्पेक्ट के साथ साथ इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स भी अप्लाइड होती है। नेक्स्ट, स्टॉक। कैसे फ्रॉड किया जा सकता है स्टॉक में? एम्प्लॉइज में रिमूव द गुड्स फ्रॉम प्रीमाइसेस, बस उठा के ले गए। फिजिकल थेफ्ट। थेफ्ट ऑफ गुड्स मे बी कंसील्ड। कैसे? डैमेज गुड्स से फेंक दिए। Stock records may be manipulated by the employees who have committed the theft so that book quantity, जो बुक्स में क्वांटिटी है, that tally with the actual quantity, रिकॉर्ड में मैनिपुलेशन कर दिया। Inflating the quantity issued for production. Inflating the quantity issued for the production. Examination. Physically check the quantities in stock and those shown by stock book. तो यहां पर आ गया फिजिकल वेरिफिकेशन करना है आपको इन्वेंट्री का। क्रॉस चेकिंग गुड्स इनवर्ड एंड आउटवर्ड रजिस्टर, किसके साथ? इनवर्ड परचेजेस के साथ एंड आउटवर्ड सेल्स डे बुक के साथ। यूज ऑफ एक्सपर्ट एडवाइस वेयर एवर रिक्वायर्ड। तो जनरल पॉइंट्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि एग्जाम में आप जो पॉइंट लिखकर आएंगे दैट शुड मैच विद द सजेस्टेड आंसर और मार्किंग स्कीम ऑफ द एग्जामिनर। और एग्जामिनर अपनी मार्किंग स्कीम को, सजेस्टेड आंसर्स को ऑफ कोर्स आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से ही तैयार करेगा, और ये पॉइंट आईसीएआई के स्टडी मटेरियल वाले ही हैं। सो आपको इन्हीं पॉइंट्स को रेफर करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम वही है, क्या सर इतने पॉइंट याद कैसे होंगे? ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम का समाधान सिर्फ इतना है कि आप चीजों को मल्टीपल टाइम्स पर रिवाइज करें। एंड एग्जैक्टली तो नहीं लिख पाओगे, बट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट आप जो मेन की पॉइंट्स हैं उनको मेंशन कर पाओगे अपनी आंसर शीट में। और इसका एक तरीका यह भी है कि जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं ड्यूरिंग द रेगुलर बैचेस, ड्यूरिंग द रिवीजन सेशन या इन द मॉक टेस्ट पेपर, तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोसीजर फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड। जैसे हम एसए 240 के अंदर ऑडिट का प्रोसीजर कवर अप करते हैं, उसका डिटेल्ड वर्जन वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड के अंदर आएगा। ऑडिट में हम प्राइमरीली ये मानकर नहीं चलते कि फ्रॉड हुआ होगा, बट
यहां तो हमारे सामने एक सस्पेक्टेड फ्रॉड का केस है जहां पर हमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा गया है। तो while carrying out the investigation of fraud, इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट को क्या क्या करना चाहिए? असर्टेन एग्जैक्ट ड्यूटीज ऑफ द पर्सन जिस पर फ्रॉड करने का सस्पेक्ट है, डाउट है। तो बिफोर प्रोसीडिंग टू इन्वेस्टिगेट एनी काइंड ऑफ फ्रॉड, असर्टेन exact duties of the suspected person, his relationship to general routine of office, and circumstances in which any known instances of defalcation has come to light। ये इंक्वायरी आपको एक क्लू देगी किन एरियाज में आपको इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना है। सो सबसे पहला काम क्या आ जाता है, जिस पर्सन के ऊपर फ्रॉड करने का डाउट है उस पर्सन की एग्जैक्ट ड्यूटीज को असर्टेन करिए, उसकी रिलेशनशिप टू द जनरल रूटीन ऑफ द ऑफिस, किन सर्कमस्टांसिस में ये फ्रॉड हुआ है, इन चीजों को एनालाइज करिए और अब आगे बढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया जिस पर्सन के ऊपर डाउट है उसकी अथॉरिटी जितनी ज्यादा होगी, वाइडर वुड बी द फील्ड which would have to be covered by the investigation। Of course, the person sitting in a top position, enjoying higher authorities, he is in a position to commit a wide level of fraud. So accordingly, investigation scope will also be wide enough. In case detail or nature of suspected fraud is not known, in that case investigating accountant is required to study the financial and accounting structure of the organization जहां से उसको क्लू लग सकता है फ्रॉड का। Examine the line of responsibilities between the various members of the staff. Look at the system of internal control to find out the weaknesses, if any, that may exist. Direct the inquiry towards those aspects of the business where there has been excessive controls in the hand of a single person without any supervision by any other person or employee, or inherent weakness that may be in existence in the system. So, जो प्रोसीजर है हमारा फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड, ध्यान रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया, वो ऑडिट का आया या इन्वेस्टिगेशन का आया। फ्रॉड के केस में ऑडिट के प्रोसीजर SA 240 गवर्न करता है, इन्वेस्टिगेशन के केस में फ्रॉड के प्रोसीजर्स को, इन्वेस्टिगेशन के केस में ये चैप्टर 17 में जनरल प्रोसीजर्स आपको कवर अप करना है। सो सबसे पहला काम क्या आ जाता है, ascertain the exact duties of the person जिस पर आपको सस्पेक्ट है, उसकी रिलेशनशिप टू द जनरल रूटीन ऑफ ऑफिस एंड द सर्कमस्टांसिस इन विच दैट said fraud or defalcation has been committed. Thereafter, authority के ऊपर एक पॉइंट है, greater is the authority of the person who is a suspect of the fraud, wider will be the scope of investigation. In case detail or nature of fraud is not known, investigating accountant is required to study the financial and accounting structure of the organization. Examine line of responsibilities between the various members of the staff, system of internal control in operation to identify the weaknesses, if any, exist in the system. Direct the inquiry against those aspects of the business where there have been excessive control in hands of a single employee without any supervision or any other person or employee or any other inherent weakness that may be in existence in the system. Now, next, what are the various indicators of fraud? कहां से आपको फ्रॉड की इंडिकेशन मिल सकती है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड की डिस्क्रिपेंसीज, फॉर एग्जाम्पल
non recording or partial recording or incorrect recording of the transaction, delayed recording of amount, misclassification etc. तो पहला पॉइंट आ गया डिस्क्रिपेंसीज इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। दूसरा पॉइंट कंफ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंसेस, कंफ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंसेस इंक्लूडिंग मिसिंग डॉक्यूमेंट, altered document, unexplained items in reconciliation statements, discrepancies between the entity record and the confirmation received from the third parties. So, any conflicting document or missing document in the system, it indicates that some fraud may have been committed. Unacceptable management response in relation to management is denying access to the record or the person in the organization. Management is putting undue time pressure to resolve the complex issues. Management is taking undue delay in providing the requested information. Management is denying for use of CAT. Auditor को CAT allow नहीं कर रही. Unwillingness to address the identified deficiencies in the internal control. Other indication, accounting policy is not in consonance with the industry norms. Frequent changes in the accounting estimates. तो 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। इंडिकेटर ऑफ फ्रॉड, वैसे ये इंटरमीडिएट लेवल का टॉपिक है, फाइनल का नहीं है, बट स्टिल कोई सिंपल क्वेश्चन डालना हो तो इस क्वेश्चन को डाला जा सकता है। इंडिकेटर ऑफ फ्रॉड नंबर 1, डिस्क्रिपेंसीज इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। दो में से कोई भी एक एग्जांपल लिख दीजिएगा। मिसिंग और कंफ्लिक्टिंग एविडेंसेस, कोई भी दो एग्जांपल लिख दीजिएगा। अनएक्सेप्टेबल मैनेजमेंट रिस्पॉन्स, टाइम को लेकर, प्रेशर को लेकर, अनविलिंगनेस को लेकर। अदर इंडिकेशन, अकाउंटिंग पॉलिसीज वेरिएंसेस को लेकर, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को लेकर। तो ये हमारा टॉपिक था अबाउट द इंडिकेटर ऑफ फ्रॉड। अच्छा, ये टॉपिक पर्टिकुलरली मुझे लगता है इंपॉर्टेंट 4 नंबर के लिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्रॉड डायमंड। जैसे आप एसेट 240 में पढ़ते हैं, फ्रॉड रिस्क फैक्टर, फ्रॉड रिस्क फैक्टर, इंसेंटिव और प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, रैशनलाइजेशन, 3 आते हैं वहां। यहां पर इन्होंने एक और फोर्थ और डाल दिया, कैपेबिलिटी। तो एक डायमंड की शेप इसको दे दी, 4 एरियाज हो गए, इंसेंटिव, अपॉर्चुनिटी, रेशनलाइजेशन एंड कैपेबिलिटी। इंसेंटिव, आई वांट टू, आई हैव ए नीड टू कमिट द फ्रॉड, मुझे जरूरत है, मेरे एक्सपेंस पूरे नहीं हो रहे, आई हैव टू कमिट द फ्रॉड। अपॉर्चुनिटी, सिस्टम में लूप होल्स हैं, देयर इज ए वीकनेस इन द सिस्टम दैट राइट पर्सन कुड एक्सप्लॉइट एंड हेंस फ्रॉड इज पॉसिबल। रेशनलाइजेशन, एक माइंडसेट, इतना रिस्क लिया जा सकता है, इतना रिस्क लेना वर्ती है, कंसीडरिंग रिस्क एंड रिवार्ड एस्पेक्ट, कन्विंसिंग योरसेल्फ दैट दिस फ्रॉडुलेंट बिहेवियर इज वर्थ रिस्की। कैपेबिलिटी, आई एम हैविंग नेसेसरी ट्रेट्स एंड एबिलिटीज टू कमिट द फ्रॉड, मैं इस पोजीशन में हूं, मेरे पास इतना दमखम है, नॉलेज है। जैसे आईटी फील्ड के एक्सपर्ट्स, they can commit the cyber frauds easily in comparison to the other persons. So capability, having necessary traits and abilities to be the right person to pull it off, recognize this particular fraud opportunity and can turn it into reality. So 4 perspectives जो मिलकर फ्रॉड डायमंड बनते हैं, इंसेंटिव, अपॉर्चुनिटी, रैशनलाइजेशन एंड कैपेबिलिटी।
याद रखिएगा चारों वर्ड, IORC, इंसेंटिव, अपॉर्चुनिटी, रेशनलाइजेशन एंड कैपेबिलिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिटर्स एबिलिटी, इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक है बट स्टडी मटेरियल ने ऑडिटर वर्ड डाल दिया, क्या करें, डाल दिया तो डाल दिया, ऑडिट के हिसाब से पढ़ लेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट द फ्रॉड, फ्रॉड करने वाला जितना शातिर दिमाग होगा, जितना स्किलफुल होगा, उतना आपके लिए फ्रॉड को डिटेक्ट कर पाना मुश्किल होगा। फ्रीक्वेंसी एंड एक्सटेंट ऑफ मैनिपुलेशन, डिग्री ऑफ कोलिजन इन्वॉल्व्ड, size of amount manipulated, seniority of the individuals involved। तो जो पर्सन फ्रॉड कर रहा है उसकी स्किल और उसकी सीनियरिटी, जितना ज्यादा सीनियर होगा हिरार्की में, उतना ऑडिटर के लिए फ्रॉड को डिटेक्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है। ये तो दो बात हो गई फ्रॉड करने वाले पर्सन की, skillfulness of the person committing the fraud, seniority of the person committing the fraud। अब ये है तीन और पॉइंट, फ्रीक्वेंसी एंड एक्सटेंट ऑफ मैनिपुलेशन, डिग्री ऑफ कोलिजन इन्वॉल्व्ड एंड साइज ऑफ इंडिविजुअल अमाउंट मैनिपुलेटेड। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, एज सच कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये फ्रॉड डायमंड का है या फिर स्टॉक का, सप्लायर्स लेजर का। तो दिस इज अबाउट द इन्वेस्टिगेशन। तो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट था हमारा इन्वेस्टिगेशन का, जो हमने कवर अप किया है। अब इस चैप्टर में बचा है सिर्फ एक पार्ट, एंड दैट इज फॉरेंसिक अकाउंटिंग। उसको नेक्स्ट सेशन में कवर अप करेंगे और उसके साथ ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस सेशन के लिए इतना ही। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ओरल रिटर्न दोनों जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।